अगर तुसी जिंदगी च कुछ कीता अचीवमेंट कीता you want to share with the people, I'm more than happy to give you a slot. ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। Sri Akaal, my name is Panjali. हमेशा ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਾ ਲੇਟ ਸ਼ੋ। You know मैं हमेशा करना every time late show ਜਦੋਂ ਮੈਂ start ਕਰਦਾ ਹਾਂ। In fact, I'm so surprised it's working because last week ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ guest ਆਇਆ ਸੀਗਾ and somebody has recommended that guest to me. And my parents ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ please watch ਕਰਿਆ ਕਰੋ if you want to come along and I offer you this platform. ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਣਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤਾ you want to share with the people, I'm more than happy to give you a slot. So please call karo sada head office 0121551001. You know, I feel so honored and so privileged ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ youngsters they get into a different profession and they make their life out of that as a profession. ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ profession ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦੇ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਭ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋ ਸਮੇਸ਼ਨ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ I'm not going to say anything because then she will have nothing to talk about. अगर introduction में सारा कुछ दस दमा चलो टाइम ना ज़ाया करते हुए मैं उन्हें introduce करके and अच्छी show के लेके जाते हैं। लवानिया जी, good evening, how are you? Good evening जी, I'm fine, how are you? पहले तो thanks for coming in. No, it's all my pleasure. No, really. And the good thing is she comes from South London. This is my home. When I moved into England, I never liked it there. Yeah, it is pretty hectic in there. Yes. Lwani, honestly, really appreciate. You know, this is what I like. I'm here to offer you the platform and to share your success with the people worldwide, 257 countries. Proud moment कि सारी Asian community coming into the UK दी मैं गाल कਰਾਂ जो किसी भी तुसी Western countries करो. I think there's lot need for the youngsters to be really going down deep into business, politics, they which anything like all the British forces वगैरह जो भी वो country दे आगे ने. And चलो मैं तानिया नाल Lavanya दे नाल. Why do I say Tanya? Lavanya. It's a lovely name. Where did you get that from? Thank you. It was my mom actually. Mom एक novel पढ़ रही थी रविंद्रनाथ टैगोर का. वहाँ पे एक character था Lavanya. That's where she got it from. It's a lovely name. I thought that was an Italian name actually. Oh no, I don't know why. It is an Indian name. You'll be surprised. Yes. नहीं बहुत अच्छा लगा. So nice, so proud. Always Lavanya. पहले you know I always like to this program very much to inspire you. And then the people sitting at home, यार मैं भी ऐसे कुछ करना चाहता हूँ. So listen to it, please. You know, मेरे में एक चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ मेरे प्रोग्राम के अंदर when we are talking, there's certain thing आप कुछ बोलोगे ना, it can change somebody's life. Definitely. Yeah. Definitely. And you will sit one day. Yeah, I was sitting one day, and Paul was doing a show with a guest, and I picked the idea from there, and this is where I am today. Honestly, this is how things happen. You know that media is so powerful, really powerful. You know, let's start with. मेरा idea क्या होता ना to find out. You know, when you youngsters going into the college, university, or even school, you're so confused. Confused in a sense, you do everything. Your mind is full of ideas, and you think, oh, what my parents haven't done it, I'm going to do this and I'm going to do that. So by the time flies, you think I've done nothing. Honestly, then you feel great. I think my parents done better than what I've done it. But there are some people like yourself. You know, मेरे कहने का मकसद क्या? Sometimes when you got so much in your mind, it's difficult to achieve what you want to achieve. If you focus what you want to do, then you can get there quicker. Let's start. आपका जन्म कहाँ पे हुआ? Or you know, let's start the journey. Right. So I was born in Kolkata, India. Okay. वहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल फैमिली से बिलोंग करती थी. हम लोग के पास ज़्यादा नहीं था बट प्यार बहुत था. क्या बात है. हाँ. क्या बात है. उसके बाद मेरी मम्मी she worked really hard to put me to a private school. Before that I was in a Bengali medium school actually. मेरे को इंग्लिश भी बोलना नहीं आता था till age 14. Then मेरा स्कूल चेंज हुआ, मेरी कहानी चेंज हुई. Obviously starting में थोड़ा बहुत bullying का प्रॉब्लम था क्योंकि you know इंग्लिश नहीं बोलना आता था, outsider थी. But probably that's always been my story. I've always been an outsider. I was never really meant to fit in a box. Oh my God. तो उसके बाद स्कूल मैंने फिनिश किया. Then I went to college, undergrads की BCom honors. I majored in marketing. तभी मेरे को marketing का
थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया. How did that happen? कैसे लगा फैमिली में कुछ था पहले? तो मेरी मम्मी शी इज़ ऑलवेज बीन इन मार्केटिंग फील्ड. वो काम करती थी, पहले कंपनी में मार्केटिंग करती थी, उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया. सो शी वेंट रियली फार अवे फ्रॉम मार्केटिंग. शी इज़ अ बिल्डर टुडे. तो बिजनेस मैंने मॉम से सीखा, बट मार्केटिंग मेरे दिमाग में हमेशा ही था, क्योंकि यू नो व्हाट दे से, योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. द वे यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ, दैट मीन्स द वर्ल्ड to yourself and to the people that are watching you or that are communicating with you. So yeah, I've always been interested in this field. But you know, at that age, when 14, 15, you said you had your mind focused already. If you look at now, marketing is a big field you can really go into in a big way. And it's a right profession to pick up, and because there's you can really make yourself out of that, Yes. the profession. लेकिन वो टाइम के आपको क्या पता था कि where this is going to lead me to? No, so उस टाइम पे तो मेरा मेन फोकस था स्कूल ख़त्म करना. फिर जब मैं स्कूल ख़त्म की तब मेरा फोकस बना कॉलेज ख़त्म करना. कॉलेज ख़त्म की, मैं मास्टर्स करने यहाँ पे आई. मैंने एमबीए किया फ्रॉम ARU कैम्ब्रिज. वहाँ पे मैंने मास्टर्स ख़त्म किया. आई मेजर इन डिजिटल मार्केटिंग देयर. उसके बाद मैं आई वाज वर्किंग विद सम ऑफ द क्लाइंट्स ऑलरेडी. मैं फ्रीलांस कर रही थी, और उसके ठीक बाद मैं PhD. This is Kolkata or here? This is in here. When did you move here? So by the way? I moved here probably like 7 years ago. 7 years. 7 years ago. I came here to do my MBA. तब मेरे को एकदम नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा. मेरे दिमाग में हमेशा था कि ठीक है, मैं पढ़ूंगी, पढ़ के probably I will go back and be with my family. I think I'd like to come back here again now. Both important, coming from Calcutta and deciding to go to UK, a Western country. कोई जान पहचान थी यहाँ पे किसी के साथ? नहीं, not really. कुछ भी नहीं. कुछ भी नहीं. But मैं अकेली you आई. know, for a लड़की के लिए, I really respect you for that. बड़ी हिम्मत चाहिए. You know, गट्स चाहिए, पैसा चाहिए, सब कुछ चाहिए. और एशियन फैमिली, कोई भी एशियन फैमिली होगी, they would never like their daughter to travel alone and try to make a living in the Western country. तो ये हर्डल आपने कैसे पास किया? तो ये I know I came here alone, but मेरे साथ फ़ोन पे हमेशा मेरी मम्मी थी. क्या बात है? She's always been a very big support system for me. बचपन से she has taught me so many things that probably in the Asian community we don't really get to be taught around those things, like for example mindset. How important is mindset for you? How important is being independent for you? How important is going somewhere alone and staying there and showing to the world and to yourself that I can do this? How important that is for you? Probably in today's world, it's 2021. Of course, there are so many girls trying to do so many things, but there are still limitations. Exactly. Yeah, but I think एक अच्छा education और घर का support हो तो सब कुछ possible है. लवन्या, एक बात, you know, when I talk, मेरे दिमाग में इतने सवाल आते हैं ना. When I ask you your journey, तो मैं ना focus कर देता हूँ. I can feel आप यहाँ से फ्लाई ले, आप यहाँ पे आए, अकेले आए, कितनी तकलीफ, कितनी प्रॉब्लम होती होगी. It's such a big achievement what you've done. Thank you so And much. you know, as a child, when you studying 14, 15 school में थे ना, मुझे लगता है you were one of the very sensible child, very focused child. And you know, you were just hooked to the books. Is that, am I right to say that? Well, not really, to be very honest, because I was never really a nerd, but I was a geek. मैं हमेशा जानने का try करती थी. I've always been a what person and a why person. Why does this happen? What is this for? बच्चे तो normally होते हैं ना. हाँ, but मैं आज बच्ची नहीं हूँ, but अभी भी मेरे दिमाग में ऐसा ही है कि आज भी मेरे को कुछ भी होता है, so I need to know why, I need to know how, I need to know what. If I don't get to know, I think I just can't take that, you know. I have to. Yes. You know, कई दफ़ा कई जगह पे they teach their employees कि if a boss says कि तुम ये करो, इसे jump high. बोलते हैं don't ask me कि why, ask me how high you want. How high you want to jump? That's very true. तो आपने ऐसे नहीं किया. No, so you know, planning तो हम लोग सबको ही करते हैं, but life happens. Nothing goes according to the plan sometimes, but then you overpass that, overcome that. Then there is another chapter that works for you. Probably you're happy there. फिर again challenges आते हैं. So if you take life that way, how high, then of course anything is possible. You feel कि
You know, because we didn't talk much कि आपको स्कूल के अंदर कॉलेज में किधर भी कोई कैरियर एडवाइस मिली टीचर से कि नहीं मिली, but what it seemed to me so far कि your mom was there all the time, उसके blessing है आपको, मुझे लगता है 100%, because you are connected so close to each other. Yes. And you're always on the phone. किसी तरह कोई बात करनी होगी, you pick up a phone and you don't feel she's like 1,000 miles away. She even taught me how to cook on FaceTime. No, really? I did not know how to cook rice. क्योंकि घर पे क्या होता है ना, इंडिया में हम लोग के घर पे हेल्प है तो कोई स्ट्रगल नहीं है, कुछ करना भी नहीं पड़ता है, पानी भी चाहिए मम्मी पिला रही है पानी, यहाँ पे आके सब कुछ करना पड़ा, तो मैं सीखी धीरे धीरे. And I think it's not just me, I think a lot of people are like me. A lot of people are like me. You know, as a father, I'm just thinking, if I had a daughter, I don't think I would make her life miserable, because miserable in the sense प्यार से, because you love that girl so much, you're thinking मेरी उसको ये ना हो उसका वो, you know what happens in the world, especially letting your daughter go into the western country, अकेली जाएगी तो बाप के लिए बड़ा मुश्किल है, माँ के लिए very very tough. तो you know ये हर्डल से बाहर निकल कर आकर, and you have proved yourself, जो उन्होंने trust किया था, you have kept that. And I'm sure they must be sticking their head high in the air thinking कि मेरी डॉटर ने मेरा नाम रोशन किया अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है. But thank you so much. अभी तो मतलब मैंने बस स्टार्ट किया है, आगे आगे देखते हैं क्या होता है. पर यार फिर भी you know the most difficult part होता है स्टार्ट करना. Once you starting it, because you don't know whether this is going to lift on, कुछ भी you know, अभी फ्लाइट की बात करता हूँ, एयरक्राफ्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज है, had a PPL license. When you're going to take off the flight, that's the most essential or dangerous time. You could be very concentration होनी चाहिए, सब कुछ चाहिए, पता नहीं क्या होने वाला क्या नहीं होना चाहिए. अगर आपने जब भी लिफ्ट कर लिया, प्लेन ऊपर हाइट पे चले गया, then it cruises on. True. अभी आपको 7 साल हो गया, now you got to cruise on now. No, definitely. I mean, I think I'm not saying that I have achieved all my goals, मगर मैंने शुरुआत किया है और मैं बहुत focused हूँ, तो I am positive. Of course, life तो प्लान के अकॉर्डिंगली कभी कभार नहीं जाता है, बट कुछ तो भगवान के ऊपर भी छोड़ना पड़ेगा ना, तो हाँ. No, but you know, I always say, भगवान भी बेशक कहता है कि तुम 2 कदम चलो, and I'll come with you for the rest of the Very country you're true. going to take. Very you true. know, We have to take action. कुछ तो करना पड़ेगा ना. You We have just to can't take action. भगवान पे छोड़ दे के भाई मैं प्रे करता हूँ, तेरे को याद करता हूँ, तू मेरे लिए कर, ऐसे नहीं होता ना. It doesn't work like that. No. अच्छा, what have you exactly done or doing now? Let's talk about your job now, exactly. Right, so I own a digital marketing agency right now. Digital marketing. Yes, it's focused towards the F&B industry, food and beverages industry, hospitality industry comes under that. Tell Melinda, because this is for the viewers as well, because like myself, everybody probably doesn't know what a digital marketing is. थोड़ा उसके पहले explain करो, what is ठीक that? है. So basically, if you want to scale and grow your business online, आप मेरे पास आओ, मैं आपको हेल्प कर दूंगी, क्योंकि आज के डेट पे क्या होता है कि आज के डेट पे सब कुछ डिजिटल है. एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. पीपल ऑलवेज हैव देयर फोन्स इन देयर हैंड्स, देयर लैपटॉप्स, देयर कंप्यूटर्स. पहले क्या होता था, 20 साल पहले किसी को अगर बिज़नेस स्टार्ट करना होता था तो वो शॉप खरीदेगा, शॉप खरीदने के बाद वो डिज़ाइन करेगा, डेकोरेट करेगा, आदमी को हायर करेगा, बहुत कुछ होता था, पेपर साइन करेगा. देयर आर सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस, राइट? बट नाउअडेज it's so easy to start your business and scale it digitally. I think कोई भी आपके फिज़िकल शॉप के सामने आता पहले तभी देखता कि आपका बिज़नेस ये है, मगर अभी इंटरनेट पे तो कितने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, 7 billion people. Now, to showcase your business in front of those people, that's what I do. Oh my God. Yeah. Digital marketing. Digital marketing. That's such an interesting. Let me go backwards and forward with this question, because I want to create interest myself and लोगों भी जो घर पे देखते हैं ना, because this is extremely a very good profession, honestly. Self-employed, most important, and you're working for yourself, and then it's you meet people and you're doing something very creative, and you're growing some other people's business. Yes. Yeah. So Your community building the community. Building, yeah. तो इसमें जब भी आपने स्टार्ट किया, what knowledge did you have कि मुझे कौन से subject चाहिए to what you're doing now? So I've been fortunate enough because I've had my degrees. I was taught in university
about digital marketing a lot, but I think you're never taught a lot, right? So you do have to do your own research, you do have to do your own networking, you do have to collect your team who you can trust and who are hard workers and resilient people. So I think it's a combination of a lot of things. It's not just one thing. लेकिन इसमें do you have to be IT literate as well? IT literate? हाँ. No, I do have my IT team who are helping me. I'm a strategist. I make strategies. Okay, you're there. So yeah, I make strategies, and I also do project management. I also do social media marketing. So entrepreneur होने के लिए ना, you have to know like all these things. Otherwise, you don't know what your staff is doing or what your team members are doing. तो आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी सब चीज़ में चाहिए ही होगा. लोने मैं honestly मैं दिल से कह रहा हूँ, आपको दुआ दे रहा हूँ. Thank you. The important चीज़ है कि you know you're so young and आपने अकेले ने fight करके यहाँ पे निकल कर you coming up so shining high now. You're very much onto the path के जहाँ के your confidence है, connection है, you know what you're doing. The people working for you as well now. This is something really, this is why I've called you on the platform, because I want to show the people कि you know when you decide 14-15 साल के मैंने क्या करना, stay focused and you can do a lot of things. आपका profession is not very much known within the community at the moment, Asian community. लोगों को ना भी पता नहीं क्या बात है, हमारे में बहुत टाइम लग जाता है डिसाइड करने में. जैसे मैंने पॉलिटिक्स बोला, मैंने बिजनेस का बोला, ब्रिटिश फोर्सेस के अंदर जाने में, हमारे माँ बाप कहते हैं डॉक्टर बनो, डेंटिस्ट बनो, अकाउंटेंट बनो. तो ये चीज़ें दिमाग में नहीं आती है. दिस इज समथिंग टोटली वे फ्रॉम कम्युनिटी के माइंड के अंदर से. लेकिन दिस इज सो ग्रेट. अभी सपोज देयर इज अ बिजनेसमैन कम्स अप टू यू. लेकिन ये बड़ी बात है. अगर कोई भी बिजनेस वाला आता है, he or she could be doing any business. Yeah. So you're ready to help those people? Oh yeah, definitely. So basically in my agency, we only help the F&B industry like I told you. But if somebody comes to me, then obviously I've got experience in other industries as well. Yeah, like fashion. I've got some experience in, with doctors. I've got some experience with, of course, the food and beverages business, hospitality, restaurants, hotels. Yes. Yeah, digital marketing, is it mostly your kind of thing is connected with the hospitality sector, is it? So it's not really connecting. No connection, but you're more, what's the right word? You're more qualified to help those kind of people in the hospitality. No, not really. So I am qualified to help any kind of people, but then I chose my niche. I'll tell you why. Because the industry, the world, it's so big. There are so many different kinds of businesses, right? If you want to focus on one or two things, things become easy for you. And then you build. So yeah. How do you get the business? Is it word to mouth at the moment? Okay, so I've been really fortunate to get a lot of good clients since I started in May. Before that, I was freelancing, so I did have a lot of clients. And client referrals, when you provide them with good work, that matters a lot. क्योंकि मैं जब इंडस्ट्री में आई तब मैंने एक चीज़ नोटिस किया, एक गैप नोटिस किया इंडस्ट्री में कि most people they talk a lot because talk is cheap, and then they don't really walk the walk. They promise you a lot of things, they don't really provide results. After a point of time, client acquire हो जाता है, client acquire पैसा मिल गया मेरे को, फिर मैं क्या काम दूँ क्या नहीं दूँ कुछ मैटर नहीं करता है. मगर if you can work with honesty, तब तो client भी आपको रेफर करने वाले हैं. तो मेरा मेन बिजनेस अभी तक from May until October, अभी नवंबर होने वाला है, तो from May until October मेरा पूरा client referral से चला और networking से चला. And of course I've got my online presence as well, but most of my clients are through my referrals. Yeah. This is kind of the very first time कि जो profession है उसको मैं meet कर रहा हूँ. I'm totally impressed. Such कह रहा हूँ because this profession is you're providing a service to the business world. Business owners, yes. And it's so qualified job. This is so much degrees. जो भी अपने courses वगैरह degree वगैरह किया. I remember you were saying before we started the show, lockdown में you started doing another degree.
Yeah, MRS. It was a Masters of Research. Really? Yeah. Did you really need it to do that? Because No, I didn't really need to do that, but you know. I think you're a genius, you know that. Nah, No, not honestly, really, because thank you. अगर आप सोचती हो कि लॉकडाउन में कुछ नहीं हो रहा, चलो मैं डिग्री कर लेती हूँ, यार लोग तो कितना काम करते हैं, कितने स्टडी करते हैं, इवन देन दे कांट अचीव इट. आपको फ्री टाइम था, आपने सोचा मैंने करना और आपने पास कर लिया. क्योंकि है ना सच्ची बोले तो मैं इसको एज अ साइड हसल ले रही थी. पहले मेरे को करना था पीएचडी, क्योंकि मेरे मॉम का सपना था कि मैं पीएचडी करूं, तो मैं कुछ बिना सोचे मैं पीएचडी के लिए एनरोल की. पीएचडी मेरे को मिल गया. अब बिना सोचे कर लिया. हाँ, क्योंकि मेरे को इंटरेस्ट भी था उस टॉपिक पे एक्चुअली, बट क्योंकि इट वाज बेस्ड ऑन मार्केटिंग, सो आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग. सो आई थॉट प्रॉब्ली आई विल टीच स्टूडेंट्स, आई विल टीच यूनिवर्सिटी. बट फिर मैं करते करते देखी कि ये मेरे को सही नहीं लग रहा है. इट्स नॉट रियली मेकिंग मी हैप्पी, इट्स गिविंग मी एंग्जाइटी. मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा था, तो तब मैंने छोड़ दिया. क्योंकि सबसे ज़्यादा मैटर करता है व्हाट यू आर हैप्पी अबाउट. इन ऑर्डर टू सक्सीड यू हैव टू फॉलो योर पैशन. That was not my passion. अभी ना we have got too much, only about a few minutes to go for the break. I'll start the question, कभी नहीं खत्म हो तो we can continue after the break. Suppose any business person come to you, what example can I give you? A caterer for the wedding वाले जो होते हैं. Yeah. Or if not, then I can say somebody with a supermarket or any kind of business shop का होगा है. How would you? I'll come to you कि मुझे help करो. तो Would मैं- you, how can you suggest or how can you help that person? Okay, so I'm guessing they must have a website, a catering website, because in today's world, a website is the must. It's like your business front or your shop front, right? So, what we tell our clients. That is the basic thing a businessman would do. They don't go beyond that because they have got the knowledge. Yes, And this but is where you come into. exactly, but it's very simple if you think about it. Imagine having a website, making a website, spending so much money, but what is the point if nobody gets to see it? That's where I come from. I do rankings on Google. I do rankings on other things like I do SEO, that's search engine optimization. तो आपका जो वेबसाइट है वो रैंक करेगा. ये हो गया एक पार्ट. उसके बाद सोशल मीडिया, because people are always on social media. Now you have to have a presence there. We optimize your profile on social media. We communicate to your customers. हम लोग उसके भी पहले हम लोग एक आइडियल कस्टमर बनाते हैं आपके लिए कि आप किसको फोकस कर रहे हो, आपका कस्टमर कौन होगा, उसको हम लोग टारगेटेड करते हैं. वी पुट एड्स. वी हैव वेरियस मोड्स ऑफ हेल्पिंग यू आउट टू डेवलप योर बिजनेस. You know, आपको लगेगा maybe stupid सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन there are a lot of people like myself want to know digital marketing and the website में क्या different है? तो वेबसाइट हो गया आपका शॉप फ्रंट, राइट? वेबसाइट हो गया आईटी. They showing के हम क्या business हम है, क्या business कर रहे Goldsmith हैं. है या कुछ भी है ना. कि प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है. आपका पोर्टफोलियो भी हो सकता है वहाँ पे. इफ़ यू वांट टू डू इट, वी कैन डू योर पर्सनल ब्रांडिंग. बहुत जन करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग, दैट आई वांट टू बी नोन फॉर वट एवर आई एम डूइंग, right? That's one side of it. But then what about the fact that there are so many people and there are so many businesses even online, so the competition is high, so you have to hire a person who can put you up there. The whole process is digital marketing. There is a funnel of awareness, consideration, then you sell. उसके पहले तो आप नहीं कर सकते हो ना. It's a step by step thing. You know, अभी देखो जो ये I'm linking this one to जो टीवी के ऊपर ad वगैरह आती है. And the ads को जैसे आपने बोला कि ad बड़ी simple होती है. Some has to be something totally different. You're talking, you got friends at home looking at the TV with the corner of your eye. आप कोई ad देखते हो ना, that ad pulls your attention. समझे ना, because you have put some more spices in there कि इंसान बातें करता भी उसको नोट करता है. सो बेसिकली जब भी उसकी बात होती है कि इसको कोई चीज़ चाहिए, यार मुझे ये करना, मुझे वो करना, बोलता है यार हैंग ऑन अ मिनट, मैंने टीवी पे ये देखा था, उधर से पता करते हैं. सो दिस इज समथिंग यू प्रोवाइड, नॉट समथिंग above and up. Yes. So at creatives, the thought behind it, the thought after it, everything. Because people, I think in today's date, people's trust
is getting lower and lower and lower, because a lot of people are in the market, a lot of people call themselves specialists and experts, but then while providing the service, like I said before, they don't really do it. So trust jab niche ho jata na, you have to have a voice, a brand voice जो clear होना चाहिए, जो लोगों को ट्रस्ट दिलाना चाहिए कि हाँ हम लोग आपका हेल्प करेंगे और हम लोग आगे बढ़ाएंगे, या हम लोग देखो हम लोग हैं, वी आर बिल्डिंग द कम्युनिटी, वी डोंट जस्ट केयर अबाउट ourselves, we've got altruistic motives, we care about you too. That's I think the only way that we can move forward in today's date. You know, मैं देखता हूँ टाइम बड़ी फास्ट जा रहा है. I think we will, मेरे को इतने I'm listening you to with so much interest. Honestly, मैं उम्मीद रखता हूँ कि तुम घर बैठे सुनते होंगे. बहुत you know दिदा दी प्रोग्राम में लग ना बहुत intellectual guests होंगे ने. They're so qualified, so focused in their life, and they achieve something in a very young age. ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ there's no need for that money when you're 55 60. Okay, you can buy your comfort with that, लेकिन health तो नहीं ना मिलेगी. So make money when you're younger and enjoy it at the same time. Yeah. Isn't I it? mean, just follow your passion. Money will Passion. come along the way. If you're following your passion, you are amazing at what you do. Exactly. And then money follows. So yeah. I really, चलो we should go. अब थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं. We'll have a little break. We'll come back in a minute. Please don't go too far. छोटी सी ब्रेक लेके वापस आने हैं. Thank you जी. सत श्री अकाल. ਅਕਾਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ. Welcome back in the second part. I hope ਤੁਸੀਂ miss ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ. I got Lavanya with me. Digital marketing. You know, it's something a lot of people haven't heard about it. Maybe some heard it, but I haven't got much idea कि किस तरह work out ਹੁੰਦਾ. I've got an expert with me ਜਿਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤਾ in digital marketing ਦੇ ਵਿੱਚ. ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. Especially, Lavanya, you know, after the lockdown, a lot of businesses never be able to come back and open their shutters. So the people who come back, they're still struggling. And this is the time, these are kind of the people that need your help Yeah. to lift them up. Yeah. लेकिन दूसरी बात क्या होती है, I personally feel, जो businessmen होते हैं ना, they sometimes they think very negative. Business खराब था, I haven't got much budget to do things, promotion मेरे business का. That's where I want to stop you right there. So sorry. There you go. So, you know, it's so important कि एक marketing budget start of the year में हम लोग साइड करके रखें, क्योंकि एक प्रॉब्लम जो हम लोग फेस करते हैं जब हम लोग क्लाइंट्स के साथ बात करते हैं, इट्स ओके, दे डोंट नो अबाउट मार्केटिंग. जैसे आपने स्टॉप किया, मैं भी करता हूँ. बहुत इंटरेस्ट, क्योंकि साथ साथ बात करेंगे. ठीक है. This is very important for the businessman or business lady जो लवानिया ने किया कि जो मार्केटिंग का थोड़ा बजट है, you must keep that aside. हम लोग नहीं सोचते ये चीज़. बट काफ़ी लोगों को लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये खर्चा है. खर्चा है. मगर ये खर्चा नहीं है. आप ये इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको आपके पास ये वापस आएगा ही. Of course, डिपेंड करता है कि there has to be good marketers, good people working on your team. Moving on the positive side, no? Definitely. So if you invest, it will come back to you. Now a lot of people think we will do business without marketing. तब लोग जानेंगे कैसे कि इतना business हो रहा है. Lavanya, मैं आपको बात करता हूँ because this is what I do, sales and marketing. क्योंकि this is what the media survives on the advertisement get from the businessman. जब भी लोगों से बात करते ना, they're so negative about it. About it. हाँ, तो you know, मैं आपको पहले बोल के हटता हूँ, आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको ऐड देख रहे हैं. मैंने एक वीक में 2 वीक को बात करेंगे ना, आपके यार मैंने ऐड देखी थी, मैं उनको कॉन्टेक्ट करता हूँ. The ad works, 100% works, लेकिन लोग, how do you teach them कि नहीं ये फायदेमंद चीज़ है, especially you are very much in demand at the moment, or you should be in the demand. पर आप कैसे लोगों को कन्विंस करते हो कि ये? तो एक टाइप का ऐड होता है जो हम लोग पहले करते थे, जो ब्रांड्स पहले करता था. Why is marketing in a negative limelight today? There is a reason for that. Previously, brands used to say anything to sell their products. They did not care about people. They did not care about anything else, just to sell their businesses, right? अभी क्या हो रहा है? अभी brands को दिख रहा है कि customer is king. तो जो कस्टमर्स बोलेगा आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेक दोज पीपल buy your products and you know take it from there basically, right? तो you listen to the customers. आप सोचो कस्टमर्स को क्या चाहिए,
कस्टमर्स कैसे आपको क्या रिव्यू दे रहा है, अगर कोई क्रिटिसिज्म भी दे रहा है तो उसको भी आप लो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करके वी कैन वर्क ऑन दैट, वी कैन बिल्ड ऑन दैट, बट यू हैव टू मेक customers king. That's the only way in today's date marketing works. You listen to the people. But you know, ये बहुत मुझे अच्छा, honestly I'm thoroughly enjoying. I hope कि तुम enjoy करते होंगे. Anytime give us a call. तुझे कुछ और भी पता करना होगा. She's more than happy to answer your questions. You know, जो अभी मैं बात करता हूँ कि the media is the strongest thing to send a message across. Yes. Yeah. You can't घर पे नहीं आप जा सकते हो. अगर लीफलेट दोगे तो कितनी स्ट्रीट पे जाके दे सकते हो आप. You know, there's so much you can do it. तो जो media is the strongest, जो एक we're sitting here, your voice, my voice going to 157 countries. Hopefully millions of people are watching us, which is great. You're sending your message across. तो पहले तो you know जो businessmen जैसे गाल कर दे. दूसरा मेरा most important the youngsters are studying and trying to make a decision what they want to do in their life. Very strong profession. Please listen to carefully. This is the kind of things you want to move on. It's unique. It's not openly known at the moment, especially with the Asian community. Yeah. I think this क्योंकि हमारे लोगों में क्या होता है लवानिया, हम एक चीज करते हैं तो सारे उसकी तरफ भागने शुरू कर देते हैं. नहीं, एकदम सही बात है. Isn't it? एकदम सही बात है. तो आपने वो ट्रेंड ब्रेक किया है. मैं जब स्टार्ट की तब मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि ये मत करो, इसमें तो डिमांड नहीं है, ये क्या कर रही हो, ये तो खाली इंस्टाग्राम में, ये तो हॉबी है, या वेबसाइट क्यों क्रिएट कर रहे हो, ये तो तुम्हारा काम नहीं होगा, तुम तो लड़की हो, या एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में मत घुसो, बहुत सारा प्रॉब्लम्स होगा. I feel like you should never listen to anybody. So the youngsters that are watching the show right now, I would want to tell them not to listen to anybody. Make mistakes, it's fine. Mistakes करना अच्छा होता है. मैंने काफ़ी मिस्टेक्स किया लाइफ में. देखो इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ. आप लाइफ में कुछ भी करोगे ना, आपने वाइट कलर की गाड़ी ली, यार तूने ब्लैक क्यों नहीं ली, आपने वो किया, आपने वो क्यों नहीं किया. क्रिटिसिज्म्स. हाँ, तू किधर, मैं हॉलीडे जाके, यार उधर नहीं जाना था, उधर जाना था. यू नो यू लिसन टू दिस ऑल द टाइम. इन जनरल लाइफ के अंदर होता है. स्पेशली व्हेन यू टेकिंग इतना बड़ा आपने एजुकेशन लेके, डिग्री लेके, फोकस करके यू मूविंग दिस लाइन, देयर इज अ नेगेटिविटी फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स, स्पेशली फ्रेंड्स, नॉट अ फैमिली. यू नो कितना हार्ट ब्रेकिंग होता है ये. यू थिंकिंग एक दफा तो दिमाग में डाउट तो आ जाता है ना. Sorry, I'll stop you again right there. I feel like if you are a good friend, you will get good friends. If you are a bad friend, nobody will care about you. They will be bad to you too. No, I will disagree क्योंकि लोगों की ना क्योंकि ये आदत ही होती है. बहुत लोग वैसे हैं, बट लोग तो कुछ कहेंगे. कौन सा गाना था वो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. It's one of my mother's favorite song. I'm bringing her again back in the picture. लोगों का काम है कहना. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. क्या बात है. I should remember that. बहुत अच्छी बात की आपने. Yes. So I mean, of course people will talk. People, that's their mouth and that's their business. Some people you will see they talk because they're not happy in their own life. इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं. ये probably it's not even anything to do with me. तो सबका अगर मैं सुनूंगी तब तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो जाएगा. Absolutely, तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी. इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट. मैं थोड़ा ऐड कर देता हूँ. सुनो सबकी बात, करो वो जो आपको अच्छा लगता है. बात बहुत सही बात है. सही बात है ना. बहुत सही बात. Don't say don't listen. Listen to the people. Don't get confused with it. Lavanya ने जो बोला कि stay focused. Whatever happens, I'm going to cross this. I'm going to go to the other side of the bridge. Very true. Even if we make mistakes, we should not leave it at that. We should not think we are losers. Because with this society, so many criticism, so many negativity, we often don't believe in ourselves. So then that becomes a major issue in people's life. I mean, you know, marketing is kind of related to psychology. You have to understand what's going on in people's minds. So psychologically speaking, I think everybody needs to mind their own business. If that doesn't happen, then just leave it at that. Don't listen to people. Do your own thing. Because the world is not simple, right? People will talk. There's a word coming to my mouth. It's not very polite for me to say that. But as you said, the best is don't listen to people. Because no, listen karo, but you do what you want to do. You know, एक चीज़ पता क्या होती है? अगर youngsters like yourself were coming up 14, 15, 18, study किया, university में गए, degree वगैरह लिया,
एंड वो मेजोरिटी ऑफ द सबसे पहले बात तो देखो, एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट वगैरह का नॉलेज है थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि मेरा प्रोफेशन नहीं है, ओके, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपसे उसकी इंफॉर्मेशन नहीं लूँ, क्योंकि कल मैं कहाँ पे बात होगी, आई कैन टॉक अबाउट इट। मैं कन्वर्सेशन के अंदर मैं बात कर सकता हूँ, वरना दो लोग बात करते हैं कि तो मैं दम लेके बैठा रहूँगा तो नॉलेज कहाँ से आएगी। बट परफेक्शन तो स्टार्टिंग में नहीं आता ना। हाँ, आज जो भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, एंड नॉट इवन द पीपल ओनली इन बिजनेस, इवन लाइक आउट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड, whoever has made something of their life, they were not perfect in the end. If I start thinking, okay, मेरा ये जब perfect होगा तभी मैं start करूँगा, या तभी मैं start करूँगी, या तभी I can talk about my achievements, or I can talk about what I've done in my life, तब तो we will keep sitting down, because it's just a concept in our mind. It's never perfect, is it? but you know हमारे फील्ड के अंदर ऐसा बहुत होता है, स्पेशली लाइक मी, a lot of people know me, different shows पर इंटेलेक्चुअल गेस्ट लेके आता हूँ, तो जब भी कोई बात होगी, यू नो, जब भी कोई बिजनेसमैन बात करते हैं या कैसे, यू नो, जनरल टॉक होती है, हज द बिजनेस, नो यार धक्का खा रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ, इमीडिएटली आपका नाम आएगा मेरे दिमाग के अंदर। समझ गए ना मेरी बात? सो यू नो, नो, दिस इज अ फैक्ट, बिकॉज दैट हेल्प्स यू। आई एम अ पर्सन हु वुड गो आउट ऑफ द वे टू हेल्प पीपल। भला करूंगा किसी का, मुझे मिले न मिले, मेरा नहीं देखता कि मुझे क्या मिलना चाहिए, उसके चल जाएगा ना तो मुझे ऊपर वाला देगा मेरे। एकदम, बहुत सही बात है। दिस इज व्हाट आई लुक इनटू। बहुत सही बात है। हमारे पास कुछ पिक्चर्स वगैरह है, आई डोंट नो, बिकॉज़ सम पिक्चर्स टू शो, वी कैन टॉक अबाउट देम एज वेल। श्योर। जो आपने सुखदेव ने कहा कि इस तरह कोई फोटो लगा सकते हो, थोड़ी देर तक ऐसी पिक्चर देख के उसके बारे में गलबात करेंगे। टाइम है थोड़ा बहुत, लेकिन मेरे को बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन मुझे आपने बात करके ना, आई एम इंटरेस्टेड। आपने गैस किया होगा कि मैं बड़े प्यार से, बड़े शौक से सुन रहा हूँ आपको, तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ जो घर पे लोग बैठे आपको सुनते होंगे, यू नो, it's tough time out there, especially after the lockdown, almost 2 years, 1.5 years साल हो गया, so I'm so sorry for the people who are not able to come back into the business, not able to come back into the jobs again. लेकिन अगर जॉब चले गया, कोई इंसान सोचता अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट करना, इट्स बेटर फॉर यू टू लिसन टू के दुनिया में क्या होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट अ बिजनेस। देयर आर एक्सपर्ट्स आउट देयर इन द फील्ड, डिफरेंट फील्ड के अंदर किसी तरह का तुसी बिजनेस स्टार्ट करना, देयर आर पीपल आउट देयर, ऑल आई कैन से वॉच अकाल चैनल। मेरी कोशिश होंदी है मैं तरह तरह के इंटेलेक्चुअल गेस्ट लेके आवां। अगर तुसी जिंदगी प्रोफेशन बनना, तुसी बिजनेस करना, तुसी MP बनना, तुसी काउंसलर बनना, लॉर्ड बनना, दोज आर द पीपल आई ब्रिंग ऑन। सो डिफरेंट इंटेलेक्चुअल पीपल। आज गॉड नाल प्रोग्राम देखते हैं, आई होप तुसी एंजॉय करोगे। What else would you like to add on your personal experience? Well, since you brought lockdown, let me tell you a bit about my lockdown experience. So when the lockdown happened, मेरा यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया था, क्लाइंट्स तो थे, लेकिन घर पे 24 आवर्स बैठना, कुछ नहीं कर सकते। मेरी फैमिली रहती है इंडिया में, तो इतना ख़राब टाइम था उस टाइम पे ना, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगा। तो थोड़ा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा ही हुआ, क्योंकि हाँ कोविड हो गया था, और खास a lot of people went through a lot of people went through a lot of tough times. So कोविड हो गया, कोविड के बाद कुछ और प्रॉब्लम्स हो गया, उससे कम ओवर की, उसके बाद थोड़ा कुछ और प्रॉब्लम्स हो गया। लेट्स नॉट गेट into that in details, but my point is, I mean, then I don't know how, but I got over that. You pulled out of this. I pulled out of that, probably just thinking, okay, this is not going to stay forever, and the world will, you know, get back to what it was. Even if it doesn't get back to what it was, it's a new world. You just have to, you know, get used to what's happening right now. You know, indirectly आपने बहुत अच्छा advice दिया। देखो, we did not discuss about your problem. हर तरह की प्रॉब्लम हर तरह की होती है इंसान को, लेकिन the word you said, I'm taking that in so strongly, it's not the end of the world. No. आपको कोई आंकर पानी नहीं देगा, आपको पकड़ कर खड़ा नहीं करेगा कोई। You have to be strong enough to make a move and get up and say, listen, this is temporary. I am going to come out of this. Definitely. I think we should take our time, because everybody needs time to be sad, I believe. Nobody is 100% happy, 100% confident.
take your time, do whatever you need to do to overcome that. And then when you come out of it, you know you're a stronger person. I wouldn't say while you were back home in India, you were a weaker person, but now what you have gone through independently alone, okay, mom ki support thi, lekin this is only on the food. Are you become a very stronger person now? Oh, well, yeah, I mean, I agree to disagree because nobody can make it on their own. Everybody needs a good team. Of course. चाहे वो friends हो, चाहे वो family हो, चाहे वो चलो criticize करने वाले क्यों ना हो जो आपको challenge कर रहे हैं criticize करके. अगर कोई आपको कुछ खराब बोल रहा है, मेरे को अगर कोई कुछ खराब बोलता है कभी कभार I take it as a challenge and I say, okay, really, I cannot do that. Let's see then. You know, I think that's very important. Nobody can do everything alone. That's a misconception. So I'm not going to sit here and say I did everything alone. I have got some very good friends who have been a support system to me. I've got some bad friends who, by only criticizing me, they've probably changed me in a way and challenged me in a way for me to do better in life. I've got good family members, bad family members. It's life, right? So it's how you utilize that. It's how you utilize your own energy. एक बात मेरे दिमाग में आती है, you know, there are good and bad people, you say. किसी से नफरत नहीं करो. I tell you why. अगर आप किसी से प्यार मोहब्बत करते हो वो आपके दिल पे रहता है. हाँ. अगर आप किसी से नफरत करते हो वो आपके दिमाग में रहता है. प्यार करो या नफरत करो आपकी बॉडी के अंदर दोनों रहते हैं. लेकिन बेस्ट होता है जिसके साथ आपके नहीं है ना, जो आपको लगता है कि they are not being very much helpful, they are negative people. उनको दिमाग में भी नहीं रखना चाहिए. They should be deleted from life and from your mind and from your body. Very true. I could not agree more. अच्छा, टाइम बड़ी फास्ट जा रहा है. बड़ा मज़ा आ रहा था. लवानिया, मुझे तो होता है कि ये मेरा जो शो है 2 घंटे होना चाहिए कि मैं इतनी बातें पूछ सकता हूँ. आपसे रियली एंजॉयड इट. लेकिन फिर मेरे बॉसेस बोले कि तू फिर 3 घंटे मांगेगा. You know, so it's going to happen. I want you to look at the camera. Lavanya, I'm so honored, so privileged to have you here. Such an experience in the digital marketing के अंदर. आपको रग रग का पता है कि किस तरह का वो चीज़ होती है because आपने हासिल किया वो knowledge. So if you don't mind, आपकी जो knowledge है, I would like you to share with my viewers. किसी का भला हो जाएगा, भगवान आपका भला करेगा. Look at the camera, please. Take your time. किसी भी तरह का. Basically, you're trying to say कोई youngster घर पे बैठा ना, I hope they will change their mind कि मैं भी ये करना चाहता हूँ. Well, if you want to get into digital marketing, university degrees ये सब matter नहीं करता है. आजकल online सब कुछ available है. Go on Google, go on YouTube. You don't understand how much you can learn from there. I don't even have to tell you the steps to succeed in this field. आपको सब कुछ पता चल जाएगा. It is not rocket science. आजकल के दुनिया में internet is a blessing and also a curse. Now it's up to you how you want to use it. And about life, I would say keep your mindset straight, keep being resilient, keep being disciplined. सब कुछ लिखो. Every small thing, have a diary, write that down, and you know, follow through. When you keep ticking through the diaries, you will understand the sense of accomplishment, the sense of achievement, and you will get on with it. You will do so much in life. Thank you. Beautiful, really, really. अभी लवानिया देखो, अपने बहुत आते कि talk lot about your experience, your education, and digital marketing वगैरह. And you've given a very good advice to the youngsters, people watching at home. I hope कोई सब businessmen will be watching it. So please, it's something very new. It's not new, but this is something people need to know, learn about it, because it's new. The people who don't know what the digital marketing is, obviously it's new for you. It's been on for a very long time, but the only thing is, Saudi Asian community are getting into this, which is so proud moment के अच्छी गलत सारे youngsters करते हैं. You know, now hopefully it's the end of this COVID-19 lockdown ease down हो गया, traveling भी है, hopefully it's going to be in a full swing. What are your future plans now? Well, my goal at the moment is to obviously make my company bigger. I have had a good kickstart. I have got some very good clients, but मुझे ये company को और बड़ा करना है, and I want to focus on this now. Only tunnel vision. So yeah.
you know, like in Punjabis, even if I'm not Punjabi, I've had a lot of Punjabi Let's friends. hear it. Let's hear In that. Punjabis, they say, "Jako rakhe sai mar sake na koi." So if God is keeping you, nobody can kill you. Absolutely, absolutely. Keep absolutely. going. Yeah, Lavanya, I'm so impressed with you. सच कह रहा हूँ because you know मैं हमेशा कहता हूँ को जो मुझे आज पता है, I hope I knew about 10 years ago. You know, but we're learning slowly and age जाती रही है तो हम सोचते रहते हैं. But you seem to be ahead of your. But age is just a number, though. Huh? Age is just a number. You're only as young as you believe yourself to be. ये तो मैं मानता हूँ. 100%. I believe in that 100%. You know, कई चीजें होती है वो तो नंबर होता है ना. You could be very young, but you could be looking very old because you अपने आप को you didn't look up to yourself, you let it go. ना खाने का ना पीने का किसी चीज़ का नहीं किया ना हेल्थ का किया तो ये यंग एज का क्या मकसद है कोई मकसद है ना वो उसका नहीं सही बात है और एज मकसद होना भी नहीं चाहिए आजकल आई थिंक वी थिंक सो मच अबाउट एज एंड यू नो दैट वी आर गेटिंग ओल्ड or we are too young. When we are young we want to get old, when we are old we are like, oh my god, we are getting old. But I think that's all. I mean, it's going to happen, right? We can't really change it. So something that's not in our control, why think about that? Okay, one thing I would not mind if you want to mention the name. बातों बातों पे पता लगा कि your mother was 100% behind you. She was like a rock. किसी तरह की मुसीबत होती है. But I'm sure अच्छे टाइम पे बुरे टाइम पे कई लोगों ने आपको मदद की होगी. You really want to thank them. Thank you because of them. I'm achieving what I have achieved today. If you want to thank them or anything in you, अगर नहीं अगर किसी का नाम भूल गए तो माफी मांग लेना. नहीं, I want to thank everybody that has supported me. Everybody. You don't even have to be my friend. I mean, if you are in my life, you have seen me grow. Thank you. People who haven't supported me, thank you. Because it's just the starting. I'm not stopping here. So yeah, I mean, you know, let's keep it quite simple. But I'm very grateful. I'm very grateful. And I am excited for what is to come in the future. You know, जो अच्छे लोग होते हैं आपको साथ देते हैं ना, आप encourage होते हो. जिन लोगों ने आपका आप इन लोगों को भी थैंक बोला मैंने नोट किया वो बात जिन लोगों ने आपको मदद नहीं की ना those are the people who will help you to become even more determined. Exactly. वो भी मदद है indirectly मदद है वो भी. Yeah. So don't think of the negative point कि यार उसने मुझे ये बोला तो मैं हिम्मत हार जो मैं छोड़ दूँ सब. No, you should get up and think नहीं. It's a challenge for me and I'm going to prove them wrong. Definitely. Not everybody is going to help you anyway. Because if everybody started helping everybody, then when are they helping themselves? So sometimes, you know, people probably they're selfish, they have their own reasons, they're busy. No matter what it is, you have to keep going because it's your life. So you cannot expect other people to do life for you. आपको आपका खुद का life तो जीना ही पड़ेगा. Absolutely. You know, like आपने बोला कितने लोगों को thanks बोला और जिन्होंने मदद नहीं की उनको भी there's one person I really want to thank. It's welfare officer Ashok Chauhan, and I honestly am so happy with this guy with the British Army the Nan, and this guest today Lavanya is come through Ashok Chauhan ji. Ashok ji, thank you so much. Please, Thank you so much, Ashok uncle. Absolutely. हमेशा तुसी support करते हो. मैं उम्मीद रखदा कि तुसी अद्दा support करा करो. आज तक जिन्ने भी आर्मी personnel, मेजर वगैरह, कैप्टन वगैरह कोई भी मेरे शो पे आया, this is all because of अपने अशोक चौहान करके. Such a wonderful man. Honestly, because he's helpful, this is why the God's blessings he gets all the time. So humble. Very Such humble. a big man, Very but humble so man. humble. Yes. Ashok ji, as I mentioned, Kita, hope you're sitting home watching my program, and thank you very much. Keep in touch. Akaal Channel की बहुत मदद होती है जैसे इस तरह के लोग आते हैं and you know for people to sit at home in their comfort and they listen to somebody that can change their life. No, definitely. 100%. अच्छा last minute एक दो मिनट रहते हैं. Anything else you want to add? मैं भूल गया कुछ पूछने में. Something you maybe forgot to say something. Anything you want to add? Lastly, I want to thank you My pleasure. because आप जो कर रहे हो, you're providing a channel, a mode ताकि लोग आए और कितने काफ़ी सारे लोगों के सामने हम लोग का मतलब लाइफ स्टोरीज, हम लोग का बिजनेस स्टोरीज
बोल सके, उसके लिए आपको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ सबसे पहले तो, क्योंकि यूके में क्या होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, इंग्लिश चैनल्स है, ये है, वो शो है, बट एक कल्चरल जो चीज़ आप बरकरार रख रहे हो, सॉरी फॉर माई हिंदी, इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, wonderful, wonderful. but yeah, I think you should be, you know, acknowledged as well, so a नहीं। very big thank you for you. लवन्या, एक बात होती है, देखो जब भी आप कुछ भी करना चाहते हो, चैरिटी वर्क करना चाहते हो, ये मेरा विश्वास, अपना खुद का विश्वास है, आपको अपनी थिंकिंग होती है, मैं कुछ भी करना चाहूँगा जब तक मुझे ऊपर से इजाज़त नहीं मिलेगी, उसकी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आज मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ, कुछ किया होगा, मुझे ब्लेसिंग मिली होगी कि मुझे भगवान ने वो मुझे दिया, प्लेटफॉर्म दिया, और मैं लोगों की मदद कर रहा हूँ। आई एम जस्ट हेल्पिंग पीपल आउट। मैं चाहता हूँ किसी का भला होगा, किसी के फेस पे स्माइल आएगी ना, तो मुझे लगेगा पता नहीं कि मैंने कौन सी लॉटरी विन कर दी। And we are learning from you. No, it's not. We're learning from everybody. एक दूसरे No, से we are learning. Us youngsters, I think a personality like yourself on TV, we have a lot to learn from You're making people me like blush you. now. Oh, please don't. नहीं, honestly, this is how it works. Please मैं हमेशा कहना ना, तुसी किसी ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ, give me a call, खुद आना, तुसी इंस्पायर करना लोगों ਨੂੰ, खुद ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। थोड़े बच्चे हैगे ने, कुछ कर रहे ने, ਉਹਨੂੰ थोड़े बच्चे ਨੂੰ पता नहीं लगता ਕੀ करना, प्लीज़ give us a call। ਤੇ lot of fields ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। Lavanya, in the end, I really thank you. Thank you. It was And my pleasure. I hope you enjoyed yourself here. Very much. Thank और you. आपके यार दोस्त, अपनी फैमिली जो भी घर पे देखते होंगे, दुआ देते होंगे, आपको ब्लेसिंग देते होंगे, तो उम्मीद रखता हूँ और प्रे करता हूँ कि you be as successful in you whatever you want to do. Thank you. Means a lot to me. नहीं, Means honestly, a lot. दिल से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, because कहीं भी बैठी होगी, you have made yourself, तो याद करोगे यार मुझे उसकी दुआ लगी, उसकी दुआ लगी, लगती तो भगवान देता, लेकिन हम तो सिर्फ दुआ दे सकते हैं, एकदम। सबसे बेहतर। एंड अगेन नेक्स्ट वीक सेम टाइम फिर थोड़ा मुलाकात होगी। प्लीज़ मैं बार बार कहूँगा सानू फीडबैक दिया करो, लेट अस नो कि तुसी किदा दे प्रोग्राम लाइक करदे हैं, व्हाट काइंड ऑफ गेस्ट यू वांट टू ब्रिंग इट ऑन। दे वेरी डिफिकल्ट टू गेट होल्ड ऑफ देम लाइक प्रोफेशनल्स, बट वी मैनेज वन वे और द अदर। अगेन दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग। नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस पे मुलाकात होगी। रब लंबी उम्र दवे। तुसी रखियो अपना ख्याल, असीं रखांगे अपना। से गुड बाय। Goodbye. सत Thank श्री अकाल you. जी सारिਆਂ ਨੂੰ। बाय बाय। Sat Sri Akal.